Okay, guys, come on. Come on. Okay, I think we should be back in business now. Uh, Let me know if you can hear me. Uh, Great. Fantastic. Okay, guys, come on. Like all things, restart Mara computer को and it started working. So yeah. आधे घंटे पहले आज मैं पूरा टेस्ट करके गया था, ये सोच के कि हर बार मुझे देर हो जाती है, लेकिन इस बार जो है देर नहीं होनी चाहिए. Thank you guys for being so patient, and those who are here now, 21 viewers are watching right now, so that's good. I'm just trying to figure out whether all the settings are correct or not, and yeah, they're more or less okay. Let me see if I can increase the volume a bit, and let's see whether that works. And yeah, so hi guys, it's been a long time, and काफ़ी वक्त हो गया मुझे लाइव आए हुए, और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था आऊँ ना आऊँ. बहुत टाइम से बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या वजह है. तो but anyway, first of all, I want to tell you guys, go to Instagram, GMax Studios. I have put a post there for a contest, जो कि shoot your mother contest है. On Mother's Day, I launched it, and there are a few fabulous prizes to be won. Prize एक ही तरह का है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ अलग है. It's a book which I like personally a lot. So there are 3 books that ये देखिए, ये जो है सोनी के आई ऑटो फोकस ने इसको जो है पकड़ लिया, and yeah, now it's got the girl, and yeah, so anyway, so this is the prize in question. You have to shoot a portrait. There are 3 books, and in fact, मतलब I really love this book, and मेरे पास अपनी भी शायद 1 या 2 कॉपी और हैं, ये यहाँ पे रखी हुई है. These are a brilliant set of portraits by Steve McCurry, and you can see there is a lot to learn by just looking at the pictures. इस book में और कोई description वगैरह नहीं है, but it's quite a thick book. It's a small book. You can use it for a lot of stuff, for referencing, for the different kinds of portraits. काफ़ी जो है मेरे ख्याल से आपने देखी नहीं होंगी. तो go to Instagram and participate in the Shoot Your Mother contest. आपको अपने ही उस पे अपनी ही फीड पे अपनी मदर की पोर्ट्रेट, या अगर किसी वजह से अपनी मदर की पोर्ट्रेट नहीं ले सकते तो किसी और करीबी रिश्तेदार या दोस्त की पोर्ट्रेट भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक कैप्शन कि वो फ़ोटोग्राफ क्यों आपने ली और आपको क्यों लगता है कि वो फ़ोटोग्राफ जो है आपके दोस्त को या आपकी मदर को रिप्रेजेंट करती है. तो ये आपको करना है. So I hope to see a lot of entries from you guys, and so I am good, guys, and
Please give me a thumbs up if you can hear me, or because ये एक ही single screen है मेरा. I don't think there should be a problem now, but okay, so okay, Ramesh, thank you. रमेश कुमार ने पहला थम्स अप भेजा. एंड रॉबिन घाई इज हियर. रॉबिन, बहुत वक्त बाद हम लोग मिल रहे हैं, ऑनलाइन ही सही. कल्लोल मुखोपाध्याय फोटोग्राफी, ALPS presents Abhishek Padge. So guys, I hope all of you are doing well, all of you are good. और तो जैसा कि मैंने कहा कि I really hope to see you guys, and I also have started a new community. तो नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन शायद लोग जो हैं इसके बारे में जानते कम हैं. और तो नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए चैनल के थ्रू. तो काफ़ी कुछ जो है मैं शुरुआत कर रहा हूँ. स्टार्टिंग पॉइंट इज़ द कॉन्टेस्ट, एंड देयर इज़ other more contests coming up, and of course hopefully I will also start doing some videos. कुछ अलग तरह के videos होंगे, but let's see if you like them. संतोष राउत कह रहे हैं सर जी पैंडमिक में क्या क्या किया आपने. मैंने बहुत कुछ किया. मतलब I was obviously at home for a very long time, and so I started doing a lot of things. Actually मतलब मैं थोड़ा सा I started looking at photography very differently during the pandemic, because और मेरे ख्याल से वो हर एक के साथ ही हुआ, क्योंकि बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा था. There were no professional shoots. कुछ लोगों ने बीच में एक कॉन्सेप्ट फ्लोट हो रहा था इंडस्ट्री में कि आप जो हैं फेस टाइम पे आप वो कीजिए, पोर्ट्रेट सेशन कीजिए. एंड एक तो जगह से मुझे कॉल आए, बट व्हेन आई ट्राई टू फिगर आउट कि क्या है और वो कैसे किया जाएगा, देन नोबडी हैड द आंसर, बिकॉज कि अगर हम मिल नहीं रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने किया, आई एग्री, बट यू नीड a certain level of cooperation from the subject side. तो अगर आप जैसे एक strict एक एजेंसी हैं, और जैसे एक जैसे जगह से मुझे कॉल आई थी पूछने के लिए कि क्या आप सोनम कपूर के साथ आप ये फेस टाइम शूट करेंगे. मैंने कहा बिल्कुल करेंगे भाई. बट द थिंग इज़ व्हेन आई आस्क्ड कि who will show me what corners of the house we are going to be using, एक दिन पहले या 2 दिन पहले प्रेप के लिए, ताकि जो टैलेंट का जो वक्त है, या मतलब सोनम का जो वक्त है, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा ज़ाया ना हो. तो उस वजह से जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट मी टू बी प्रिपेयर्ड. And I wanted somebody to show me those corners, show me those locations, show me the window location, so that then I could, at the time of the shoot, मैं उनको डायरेक्ट कर पाता और बोलता कि भाई अपना चेहरा इस तरफ कीजिए, चलिए अभी उधर वो ड्राइंग रूम के पीछे जो एक खिड़की थी, चलिए उधर चलते हैं. बट द थिंग इज़ कि nobody knew how to approach that part of the problem, and that is why it did not happen. So yeah. Robin Ghai, this is a 42-second pause in sending messages. Is it a 42-second pause? I thought there was there is supposed to be. मैंने slow mode on किया था. Let me see if I can switch it off. या नहीं करूँ क्या? क्योंकि I don't know.
YouTube जो है क्या नाराज़ हो गया और तो anyway I ALPS प्रेजेंट्स कह रहे हैं मैं 4 से 5 हाँ आई थिंक माई लास्ट लाइव वॉज इन जैन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सचिन शर्मा पूछ रहे हैं सर पोर्ट्रेट ही चाहिए मदर की या कैसा भी चलेगा? इट इज़ अ पोर्ट्रेट कॉन्टेस्ट। मैं चाहता हूँ कि इसके ज़रिए हम लोग अक्सर जो है बाहर की तरफ देखते हैं, वी आर आउटवर्ड लुकिंग इन ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट डू यू नो डू एंड सी एंड वी आर लुकिंग आउटवर्ड्स एज फोटोग्राफर्स। मैं चाहता था कि फोटोग्राफी का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो बात शायद फोर फ्रंट में मुझे ये लॉकडाउन के वक्त जो है लगी, कि जो हम फोटोग्राफर्स हैं और हमारे पास ये गिफ्ट है, ये टैलेंट है, तो हम लोग को एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि जो अपना टैलेंट है उसको इनवर्ड यानी अपने घर के अंदर जो हमारे रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, यार दोस्त हैं, उनकी तस्वीरें लें और उनकी जर्नी को अगर हम डॉक्यूमेंट करें तो वो एक बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। और शायद इमीडिएटली आपको उस चीज़ का महत्व जो है वो अभी ना दिखे, लेकिन after a few years you will see and you will definitely cherish those memories. So that is why this shoot your mother contest is there and उसमें जो है the मतलब for some reason if you can't take your mother's portrait that is fine, but it has to be a portrait. I want to emphasize the importance of taking portraits जो उन लोगों के जो आपके इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं। ए भी कह रहे हैं योर ट्यूटोरियल वीडियोज़ आर अमेजिंग, आई हैव लर्नड ऑल फ्रॉम योर चैनल, थैंक यू सो मच। I also met a couple of guys recently. पिछले हफ्ते नहीं, 2 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता या 3 हफ्ता पहले मैं एक फ़ोटो वॉक पे गया था। और अभी जैसे लोगों ने पूछा कि आप क्या क्या कर रहे हैं, तो मैंने जो है एक तरह से एक दोबारा जो है चीज़ों की शुरुआत करने की कोशिश की और सोचा कि अगर आज के वक्त में मैं जो हूँ जुड़ना चाहूँ और एक स्टूडेंट की तरह फिर से चीज़ों को देखना चाहूँ, सोचना समझना चाहूँ कि वक्त कहाँ जा रहा है और फोटोग्राफी जो है वो कैसे बदल रही है, तो इस लिहाज से मैं जो था कुछ लोगों से मिलना चाहता था, कुछ लोगों के। तो मुंबई फ़ोटो वॉक्स करके एक इंस्टाग्राम हैंडल है और उन्होंने एडवर्टाइज़ किया कि एक फ़ोटो वॉक है, तो मैंने उसमें रजिस्टर किया एंड I went there and it was a great experience. I was there and मतलब वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे पहचाना भी और वो लोग भी यही कह रहे थे कि हमने आपके वीडियोस से सब कुछ सीखा है। इनफैक्ट दैट फोटो वॉक वाज स्पॉन्सर्ड बाय फूजी और फूजी में जो है जो एक जो one person who was working for Fuji, he said, I'm working for Fuji because I have learnt everything from your videos, and when I meet such people it gives me really really great happiness. So yeah, Mr. Y is saying good afternoon, good afternoon. ये Mr. X के बड़े भाई हैं. I'll see if I can change the setting. I don't know whether we can change the setting after I have gone live or not, but let's see. Viewer activity. Okay. Also, is everybody having a problem with the
what do you call क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे चैट मुझे क्या जो है ओके ओके, मैं इसको कम करता हूँ थोड़ा. लेट मी सी इफ़ दैट वर्क्स. रॉबिन, मैंने 10 सेकंड किया है, जस्ट सी इफ़ इट वर्क्स. हाँ, यहाँ मुझे दिखा रहा है सेंड अ मैसेज एवरी 10 सेकंड्स. मैंने उसको 10 सेकंड्स कर दिया है. गुड आफ्टरनून दिनेश शर्मा, कैसे हैं आप? रॉबिन, इज इट वर्किंग? इज इट 10 सेकंड्स? इज 42 सेकंड्स? व्हाट इज इट? आप में से कुछ लोग. सागर पूछ रहे हैं सर आपने कभी FPV फ्लाई किया है? कभी नहीं, मैंने कभी जो है एक्चुअली ड्रोन जो है कभी फ्लाई नहीं किया एक्चुअली. मैंने आई हैव टेकन कंट्रोल ऑफ इट व्हेन इट वाज इन द एयर, लेकिन मैंने कभी टेक ऑफ और लैंडिंग जो है ड्रोन की नहीं की है. और मैं मेरा पूरा इरादा है इस चीज़ को बदलने का, स्पेशली विद द न्यू ड्रोन दैट हैज़ लॉन्च्ड DJI. एक्चुअली द थिंग इज़ दैट फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स और मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ड्रोन को लेके जो कन्फ्यूजन है, आई थिंक द ड्रोन इम्पोर्टर्स आर हैविंग अ टफ टाइम बिकॉज दे आर नॉट इम्पोर्टिंग ड्रोन्स एनी मोर एंड दे आर वेरी वेरी हार्ड टू गेट. सो Aman Bhutra, Aman, thanks man, thanks for checking the lag. I think I also maybe need to cut the latency a bit more, and I don't know whether it'll allow me to check the latency. And okay, now it's not allowing me to change the latency. I should have DK Chaudhary कह रहे हैं I am from Kolkata. I watch your videos and I have learnt a lot from them. Please keep it up. Thank you, DK Chaudhary. I hope you join the Telegram channel and the community because I hope that I intend to come to Kolkata at the end of this year, and so I hope we can meet up. I had just gone to Banaras, जहाँ से रॉबिन ने बहुत ही ज़ोरदार one photograph he shot. तो I had gone to Banaras and I shot quite a few pictures there. And in fact, I met a couple of people. वहाँ पे एक wedding shoot चल रहा था, and one guy was operating the gimbal. And he approached me and he said, sir, I have learned to balance the gimbal from your video only. And then of course we took a few selfies and all of that. So it is always great to meet people who are, if nothing else, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स या जो भी आप नाम लें उनसे मिलना अच्छा लगता है, लेकिन फेलो फोटोग्राफर्स से मिल के ना बहुत अच्छा लगता है. और अगर वो आप जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ की जो लोकल चीज़ें होती हैं, लाइक आई वेंट टू बनारस फॉर व्हाट, आई वाज देयर फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम एक्चुअली. आई वाज देयर फॉर ऑलमोस्ट 10 days. मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जहाँ जाऊँ तो वो कम से कम एक हफ़्ता तो गुजारूँ. तो उसमें जो है आई वाज देयर फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, एंड तो वो लोकल फोटोग्राफर्स जो हैं वो बाकी लोग तो ऑफ कोर्स बता देते हैं आप ये खाइए वो खाइए ये देखिए वो देखिए, लेकिन एक फ़ोटोग्राफ़र का नज़रिया जो होता है वो अलग ही होता है. और अगर वो लोग जो है ऐसी जगह पे हों जहाँ आप विज़िट करने जा रहे हैं, सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग. आई रियली एन्जॉय मीटिंग दैट, स्पेंडिंग अ फ्यू इवनिंग्स, हैविंग लंच और डिनर और इवन सम शाम की चाय जो है. तो दैट वाज रियली रियली. When did I visit Banaras? Yeah, Banaras, I think I had gone, I actually landed there 3 days before, 4 days before the election. वहाँ पे 7 का इलेक्शन था, मैं शायद 5 को पहुँचा.
and it was a crazy scenario there. The hotel that I was staying, Akhilesh Yadav was staying there, and then he was joined by Mamta Banerjee. So my hotel was a crazy scene, and everything. और वहाँ पे मिस्टर मोदी जो थे वो भी आए थे उस दौरान, और मिस्टर अमित शाह भी आए थे. तो वो बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था, एंड आई गॉट टू विटनेस बनारस इन अ टोटल स्टेट ऑफ फ्रेंजी. इनफैक्ट मैं एक बार घाट से वापस भी आ रहा था तो रास्ते सारे बंद थे द डे इट वाज अखिलेश यादव्स रैली. तो आई ऑल द गाइज वर डांसिंग एंड आई वॉकड विद देम फॉर किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स, क्योंकि ट्रैफिक बंद कर दिया गया था. इट वाज क्वाइट क्रेजी, इट वाज क्वाइट अ सरियल एक्सपीरियंस. सो नीड अ लॉन्ग एंड डिटेल वीडियो ऑन प्रोग्राम मोड, डी के चौधरी कह रहे हैं. एक प्रोग्राम मोड का वीडियो है. आई डोंट नो इफ़ यू कुड लेट मी नो what you feel are the shortcomings on that. एंड इनफैक्ट जो हमारी कम्युनिटी है वो बेसिकली मेरे ख्याल से आई स्टार्टेड इट एज क्या बोलें, एज अ एड ऑन टू द वीडियोज़. तो आप वीडियोज़ एक बार देख लेते हैं और उसके बाद जो है अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वो जो है द कम्युनिटी एंड द चैनल सर्व्स एज अ ग्रेट प्लेस टू देवपति साहा चौधरी पूछ रहे हैं, डू यू थिंक द टाइम ऑफ DSLRs इज ओवर एंड वी शुड इन्वेस्ट ओनली इन मिररलेस कैमराज? तो यार दिस क्वेश्चन आई फील कि इट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, एंड I have been thinking about the same thing myself. In fact, I'm about to sell my DSLR, which is a Nikon D850, और मैंने जो है उसको बेचने का इरादा कर लिया. एंड देन जब मौका आया कि उसको मैं जो हूँ भेजूँ, आई गॉट इट सर्विस्ड, आई गॉट इट क्लीन्ड, आई गॉट इट, आई एम गिविंग इट टू समबडी. सो आई थॉट कि यार मतलब जो दूसरा बंदा है उसको जितना अच्छी कंडीशन में मिलेगा. And of course I have a great equation with Nikon India. So but when I started, when it came back and I used it, and I thought कि यार मैं ये क्यों बेच रहा हूँ, what is the so that made me think. कुछ दिन पहले शायद आप लोग को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे या कभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक अपने निकॉन D70 की भी जो है एक तस्वीर डाली थी. एंड दैट कैमरा मतलब again is a very old camera. I have it for sentimental reasons. I think it's 6 megapixels, और so the thing is कि वो कैमरा अभी भी चलता है, वो कैमरा अभी भी तस्वीरें लेता है, तो ऐसा नहीं है. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है इन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कि यू स्लोली stop getting things, like let's say a battery, और वर्स की बैटरी है आपके पास और आपको चार्जर मिलना बंद हो जाता है. तो यूजुअली जब क्या होता है कि ऐसी चीज़ें मतलब इट बिकम्स रियली काइंड ऑफ, एंड दीज अनफॉर्चुनेटली अपार्ट फ्रॉम लेट्स से लाइका कैमराज जो कि बहुत देर तक और बहुत दिनों तक सर्कुलेशन में रहते हैं, like we are on Leica just released an M11, but their M9 still sells like hotcakes. उसकी resale value भी बहुत है, और वो तो the batteries and the chargers and all the accessories are still available. तो you think यार कि मुझे इससे पहले कि इस situation में पहुँचूँ कि वो तकलीफ़ देने लगे, if you can possibly afford it and see the right time, there's a right balance of time कि आप जो है जब थोड़ा लेट बेचते हैं तो obviously when you're trying to sell stuff then everybody says कि अरे सर अब ये तो ख़त्म हो गया, ये कोई ख़रीदता नहीं है, so they pay you a lot less if you're talking to a dealer. And yet when you go to pick up a second hand DSLR they'll say कि अरे नहीं ये जो है इतने का है. So the thing is कि एक certain time होता है जहाँ तक वो, especially these new digital cameras, they hold their value.
and उसके बाद it's pretty tough to get rid of them, and you like same thing, I have an A72, A7S2, and it's a fabulous camera. I have got all the batteries, and I was thinking that I should possibly sell it, and I was thinking that I have bought a A7S3, ये बात और है, but I was thinking that this is a perfectly capable camera, and so I think with DSLRs I stand there. आगे जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो कैमरा कंपनीज हैं वो ज़्यादा टॉप एंड DSLRs में अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगी, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसे कैनन का जो नए लेंसेज का इनोवेशन तो छोड़िए, पुराने लेंसेज भी जो हैं स्पेशली शॉर्टेज ऑफ अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स फॉर लेंस मेकिंग एंड कैमरा मेकिंग, तो अब हर कंपनी को प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है एंड एवरीथिंग. So I hope that is a long answer to your very short question. It's just the market forces that they are thrusting on you, and they are saying that कि भाई ये चेंज हो गया, अब आप जो है ये लीजिए. It is like phones or your hard drives, कि वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इसमें जो है ये चीज़, हार्ड ड्राइव्स तो चढ़िए, हार्ड ड्राइव्स में फिर भी जो है थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड, बट योर फोन वेदर इट हैज़ अ मिनी USB और USB-C और अ लाइटनिंग पोर्ट, ये किसकी ज़िंदगी में ये जो है इतना फ़र्क पड़ रहा है कि एक पूरा जो प्रोटोकॉल है वो फेज आउट हो जाता है, एंड एंड देन चाहे ना चाहे आपको यू हैव टू अपग्रेड, बिकॉज स्लोली यू फील कि यार ये केबल्स मिलना बंद हो गए इसके. And like I have old hard drives which are slow, agreed, but sometimes most of the times you don't need all the time you don't need the latest and the best, right? They work well. उनको मैं जो archival purpose के लिए यूज़ करता हूँ, कोई मेरी photographs है उसका जो है 2 जगह बैकअप करके रखना होता है, तो वो I still use them. But the thing is कि now उसके cables मिलना बंद हो गए. So it's the industry's way of making more money. I don't think things are as bad जैसा कि हमको बताया जाता है कि yeah, so Ronnie is saying कि same thought I also had when I was still Canon 1300D, my first camera. Yeah. So all these are good cameras, Robin, you are right. 6D Mark II is a fantastic camera, yaar. And in fact, one of my friends had bought my Nikon 600, and again a fantastic camera, working very very well. So yeah, Nikon 850 I think will exist, will all support for a pretty long time. I think कि मतलब 5-7 साल तो रहेगा, क्योंकि उसकी बैटरी is one of the later batteries, and also the thing is कि the camera per se is kind of, it's a very very robust camera, and it's got a solid 47 megapixel camera, and it's a beautiful camera. मतलब हम लोग जो है मेरे ख्याल से लॉकडाउन के पहले के 80-90% वीडियोस, all the 4K videos that you see, I shot on the Nikon 850. So yeah, so I think at least 5-7 years, yeah. लेकिन मतलब you never know कि क्या होता है, because Nikon in the past couple of years has gone through a very very troublesome time, and troublesome time, but अब जो है they are recovering ground, with the Z9, and that camera is fantastic. And yeah, also the thing is somebody was complaining that day कि मतलब ये जो है सारी चीज़ें हैं और एक अनाउंसमेंट हो जाता है, वो चीज़ मार्केट में अभी आई नहीं है, और दूसरा अनाउंसमेंट जो है उसके बाद के मॉडल का. सो द थिंग इज़ दैट यू आर नॉट बीइंग एबल टू, एंड देयर आर सो मेनी कैमराज लाइक दिस, सो मेनी लेंसेज लाइक दैट, लाइक समबडी आई नो, कुछ हो गए मतलब 6-8 महीने हो गए उस चीज़ को, या लास्ट अगस्त की बात है, मतलब they bought a camera but the lens is not available. Somebody I know in January bought a camera but waiting for the right lens. So lens
अनाउंस हो गया, आया नहीं है, कब आएगा किसी को मालूम नहीं है। रवि व्लॉग, शादी के फोटोग्राफी की टिप्स आप बता सकते हैं? रवि व्लॉग, ये शादी की फोटोग्राफी की कोई अलग टिप्स एज सच कैमरा ऑपरेशन में नहीं होती हैं। फोटोग्राफी अगर आपको आती है, और आप अगर जो नीचे शायद मेरे डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश एपिसोड्स की अलग प्लेलिस्ट है, हिंदी एपिसोड्स की अलग प्लेलिस्ट है, अगर आप देखें उसको तो एक बार आप फोटोग्राफी के बेसिक समझ जाते हैं, एक बार फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, और तो वो चीज़ आप फिर किसी भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड सो एक तरह से कहा जाए तो शादी के टिप्स कैमरा ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी लोगों से कैसे पेश आना है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो कैमरा ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, आई थिंक यू शुड फोकस ऑन लर्निंग फोटोग्राफी, लर्निंग टू गेट टू नो योर कैमरा, और उसके बाद जो है उसको आप अप्लाई कीजिए। इट्स नो लॉन्गर एनी डिफरेंट। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, मतलब आई थिंक वो एक चीज़ अतुल कसबेकर ने मुझसे कही थी, एक इंटरव्यू मैंने उनका लिया था, और वो अभी तक मैंने किसी वजह से पब्लिश नहीं किया है, अब करूँगा शायद। तो ही सेड, माई कैमरा इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ माई बॉडी, आई एम लाइक रोबोकॉप। तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने हाथ में कैमरा पकड़ रखा है, मेरा कैमरा जो है मेरे हाथ का एक्सटेंशन है। तो जब तक हमें कैमरा से इतनी फेमिलियरिटी नहीं होती है, लाइक व्हेन आई वेंट टू बनारस, अभी मैं बात कर रहा हूँ, आई हैड शॉट फॉर आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, and I was incredibly frustrated. I had taken a new camera which I had not used, and I was getting incredibly frustrated. And कि क्या है, but the thing is कि वो उस जो टूल था, जो मशीन थी मेरे हाथ में, जो कैमरा था, उससे मेरी पहचान नहीं थी, मेरी वाकफियत नहीं थी। तो मैंने जो है on the third day while shooting and getting frustrated and मतलब I was feeling like कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये कौन सा बटन दब गया, ओहो ये अभी मुझे वीडियो लेना है, तो यार ये कैसा कैमरा है, तो वो सारी झुंझुलाहट, इट वाज नॉट अ सीमलेस, इट वाज नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट ऑन द थर्ड डे समथिंग क्लिक्ड, and then, as Bruce Lee says, I became like water, and the camera and me, मतलब जो एक distance होता है, where it is not just something that you have to control, but both of you are like one. That happened, and then the rest of the time I had such a great time. So I think कोई भी कैमरा आप यूज़ करें, जब तक उस लेवल की फेमिलियरिटी आपको नहीं होगी अपने कैमरा के साथ, you will not be able to really enjoy photography. You will always be frustrated because you will not know कि आपने जो है तो एक अपना वर्किंग स्टाइल में एक वो बनाना बहुत ज़रूरी है। एक क्या बोलें, अगर वर्क फ्लो, और वर्क फ्लो क्या होता है कि जो लोग जैसे सेटिंग मांगते हैं, बट द सेटिंग इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टुडे। ऑल द कैमराज आर सो एडवांस, देयर आर सो मेनी कस्टम बटन्स। अब आप C1 पे क्या रखते हो, ये इट विल डिफर फ्रॉम मी। आई कैन टेल यू कि हाँ भाई मेरा C1 C2 C3 कस्टम बटन्स जो भी हैं वो, या F1 F2 F3 जो भी नाम देती हैं कैमरा कंपनीज, वो मेरी ऐसी है और मैंने इनको इस वजह से रखा है, राइट? बट इट विल डिफर फॉर यू बिकॉज योर वर्किंग स्टाइल एंड योर ब्रेन इज डिफरेंट. So, yeah. Yes, Sony A74, I haven't used it, but जो भी मैंने देखा, सुना, पढ़ा है, it is supposed to be a really, really good camera, and मतलब बहुत ही it's almost as good in terms of quality for video, I'm talking, as possibly an A7S3, and
and also matlab, almost in terms of quality, the function and the features of course will be different, but the video quality is, and Sony over the past few years, in fact all the camera companies over the past few years, I think एक hardware shortage की वजह से उन लोग ने they have kind of decided to go no holds barred, और जो एग्जिस्टिंग कैमराज हैं, जो कैमराज कुछ वक्त पहले रिलीज़ हुए थे, एंड उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ जैसे सिनेटोन वगैरह, ऑल दैट कलर साइंस यू नो एग्जिस्टिंग एट दैट लेवल इज़ रियली रियली क्रेजी. Sabyasachi Das, how are you? And what about your family and friends? Everybody is fine, thank you, Sabyasachi. And I'm glad that you have learned a lot of photography stuff from my videos. Sabyasachi is also saying, then make a tutorial video on macro photography with all the camera settings, flash, diffuser, and all that. So the thing is, yeah, I like to show stuff practically, and मेरे ख्याल से I don't have all of that. So I feel kind of strange if I cannot demonstrate and say कि तो initially शायद थोड़ा मेरे videos भी इसलिए इतने late आते थे क्योंकि जिन चीज़ों का मैं इस्तेमाल करता था वो सब मेरे पास नहीं है, and then I had to wait. Like I've been waiting a very long time to kind of make a video on lens adapters. ये जो अब mirrorless में हम पुराने lenses या SLR के lenses जो है वो adapt करके लगा सकते हैं या vintage lenses लगा सकते हैं, I think that is a really really good thing. और मुझे जो है मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं जो हूँ एक वो वीडियो बनाऊँ, but the thing is I'm trying to show it practically and maybe have a few so I'm trying to arrange for those adapters. I have done if not a macro, एक थोड़ा सा macro hack का एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, where I've talked about close-up adapters and all of that. See if you want to just type GMax Studios macro photography. आप देखिए, शायद आपकी मदद करे. Some news I have heard that Nikon is not focusing in camera business and it's better to have Canon as a new camera. Your comments? I don't think that is the case because both Nikon and Canon have got varied interests, and it's not as if they are not focusing on the camera business. Their Z9 as of now, as we speak, is the most advanced camera in the world today in SLRs, मतलब जो उसका refresh rate है. और अभी जो मैंने कुछ वक्त पहले एक बात की, तो उन्होंने जो ये नया फर्मवेयर अपडेट किया है तो उसमें इतने सारे फीचर्स उसमें डाल दिए हैं. इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ न्यू कैमरा. यू मस्ट गो एंड चेक इट आउट. सो विच बजट ऑफ फोन इज़ बेस्ट फॉर फोटोग्राफी? अमन बूत्रा पूछ रहे हैं. So Aman, I would very strongly recommend the OnePlus 9 Pro. I have been using it, and so of course, I mean, I am locked into the iPhone. लेकिन क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा I feel कि the photographs I take मुझे जो है थोड़ा सा 12 megapixels लेने में I feel कि थोड़ा future proof करने के लिए. So I started using the OnePlus 9 Pro on a whim, and I really loved it, and the 40 megapixel camera and all of that is really fantastic. So I would really recommend OnePlus 9 Pro. 10 भी है, लेकिन 10 और 9 में मेरे ख्याल से कैमरा का इतना डिफरेंस नहीं है, so you might get it for a cheaper price. Also if you follow my Instagram, Aman,
you would have seen कि there is, you know, there's उसमें एक OnePlus 9 has collaborated with Hasselblad for their cameras. So the color science is very good, and they have a very crazy mode called the expand mode, where the crop ratio is like almost like 1:2, 1:3. So that's a fantastic mode on the camera itself. Really fantastic. DMax photography, sir, प्रणाम प्रणाम भाई। आप तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है DMax फोटोग्राफी, आपका लोगो मुझे जो है बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम दोनों कहीं मेले में बिछड़े हुए तो नहीं है, GMax और DMax। Kiran Studio, as a wedding photographer, I want to hire an employee, but I have a fear that they will leave as soon as they get some knowledge. What should be my thought process about such a situation? Kiran, so the thing is कि yeah, that is true, that fear, लेकिन मेरे ख्याल से आप कल के बारे में सोच के अपना आज जो है क्यों ख़राब कर रहे हो? सो द थिंग इज़ कि इफ़ यू कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉय, एंड इफ़ यू कंटिन्यू टू गिव हिम द बेनिफिट्स ऑफ योर ग्रोथ, तो आप उसको आज एक सर्टन अमाउंट ऑफ सैलरी पे वो करोगे, और उसके आने से अगर आप ज़्यादा काम कर सकते हो और आपकी आमदनी बढ़ जाती है, तो देन उसकी भी आमदनी बढ़ेगी। एंड आई डोंट थिंक ये जो डर है कि वो कल छोड़ के चला जाएगा, यार मतलब छोड़ के तो मतलब एवरीबडी लीव्स, राइट? इवन योर चिल्ड्रन विल गो। वो लोग जो है पढ़ लिख जाएंगे या पढ़ने लिखने जाएंगे कहीं, वो भी घर छोड़ के चले जाएंगे। सो द थिंग इज़ कि यू डोंट होल्ड बैक। आप अपनी जो ग्रोथ उस एम्प्लॉय की वजह से हो सकती है, और आपका बिजनेस अगर अच्छा कर रहा है, इफ़ यू आर अ गुड बॉस, इफ़ यू आर अ गुड employer, sorry, if you are a good employer and you have a great working environment, then people will not leave। क्योंकि ये भी बात सही है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, राइट? आप एक वेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे में ये वो इतना एंटरप्राइजिंग हो कि खुद जो है वो चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करे। Not all the people or not all the assistants that I have had have become entrepreneurs, कि हर एक ने जाके अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, वो नहीं है। एंड ऑल्सो द थिंग इज देर आर पीपल हु हैव गॉन, और उन्होंने कोशिश की अपना बिजनेस शुरू करने की, एंड सम ऑफ देम हैव सक्सीडेड, सम ऑफ देम हैव नॉट सक्सीडेड। सो इट्स अ वे ऑफ द वर्ल्ड। इट्स वो बोलते ना क्या, नेकी कर और कुएं में डाल। सो द थिंग इज दैट यू शुड हायर पीपल, यू आर हायरिंग पीपल फॉर योर ओन ग्रोथ। उसको मत रोको कल के बारे में सोच के। और मेरे ख्याल से ऐसा है कि आप जितना लोगों को सिखाएंगे, जितना लोगों आगे जाएंगे, द थिंग इज some people that I have taught now, they are coming back and they are telling me कि सर एक बड़ा काम आ रहा है, ये हमको थोड़ा सा डर लग रहा है करने में, आप हमारे साथ करेंगे क्या? सो उल्टा भी हो रहा है कि, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई विल नॉट वर्क विद माई। So the thing is कि you have to be flexible, and I know that those people who have मतलब they are coming back and saying कि सर आप हमारे साथ काम करेंगे, तो मुझे एक लिहाज से they are running the show there, क्योंकि अगर वो काम लेके आ रहे हैं तो मुझे उस सिनेरियो में उन बातों का ख्याल भी रखना पड़ता है कि वो काम वो लोग लेके आए हैं और मैं जो हूँ वहाँ पे बॉस नहीं हूँ। So the thing is, I know that I'm going there to support them, and yeah, it's good fun, yeah. And I get more work because of the people who are going, or they get whatever, and you are then like any other professional. So the thing is कि अगर किसी को जैसे एक फोटोग्राफर की ज़रूरत होती है, तो वो जो है आके बोलते हैं कि सर हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन वी वुड रियली लाइक यू टू डू दिस,
या हमारे पास बजट है, क्या आप करोगे? तो या व्हाई नॉट? सो इट्स रिजल्टिंग इन अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अ डिफरेंट काइंड फॉर मी। तो इन सब के बारे में मत सोचो यार, इन सब में मत पड़ो। हेलो सर, इन्होंने नाम नहीं लिखा है अपना। एंड सचिन शर्मा, मैंने आपका सवाल पढ़ लिया है। हाउ टू गेट शार्प फोकस ऑन नॉन आई ए एफ कैनन कैमरा व्हेन द सब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली मूविंग? यार डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ, मतलब टू मेनी वेरिएबल्स इन दैट क्वेश्चन। जब पहले आई ऑटो फोकस नहीं होता था, यूजुअली व्हाट वुड हैपन कि आप जो है यू वुड ट्राई एंड कीप द फोकस ट्रैकिंग, यू एंटिसिपेट। तो वो एंटिसिपेशन, एक्सपर्टीज, knowing your camera and shooting at a higher f value like a f4 f5.6 जिसमें इतना critical ना हो फोकस, मतलब provided that there is enough light. So these were all tricks to get your focus on a moving subject when there was no eye autofocus. और इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है कि कोई लिख रहा है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बट हेलो सर, इज इट रियली नेसेसरी टू लर्न मैनुअल फोटोग्राफी और ऑटो मोड वर्क्स वेल in most of the time? I have Nikon Z7 just for hobby, my travel photography. This is a very good question. See, the thing is कि what are you using your camera for? तो अभी मुझे पिछले कुछ वक्त से ऐसा लग रहा था कि ये कैमराज इतने एडवांस हो गए हैं, स्पेशली आई हैंडल द सोनी A1 फॉर आई हैड इट फॉर सम टाइम एंड तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा फोटो लेने के प्रोसेस में मेरा पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम हो गया है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई पर्सनली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे लगा कि यार इसमें मेरा पर्सनल पार्टिसिपेशन और जो मुझे एक सेटिस्फैक्शन देता है कि ये फ़ोटोग्राफ मैंने ली है और उसमें मेरा एक एक पार्टिसिपेशन होता है, एंड इट्स अ मोर हैंड्स ऑन अप्रोच. सो द थिंग इज कि आई वॉज फीलिंग स्लाइटली शॉर्ट चेंज्ड, but yet at the same time if your purpose if you are perfectly happy कि आप जो तस्वीरें ले रहे हैं उनसे आप खुश हो रहे हैं, तो किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं मैनुअल मोड में फ़ोटोग्राफ खींचता हूँ. इनफैक्ट you will, if you are taking photographs, so I will say if the camera is doing heavy lifting, अगर वो ऑटो में, प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें जो है आपका एक अच्छा वो इट्स एबल टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स वेयर यू आर जस्ट एबल टू फोकस ऑन द मोमेंट, द कंपोजिशन, तो आप जो है उन चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. आई डोंट थिंक देर इज़ एनी हार्म इन इट एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, बिकॉज आई थिंक वी ऑल हैव पिक्ड अप द कैमरा in the end to achieve something, and at the end of that achievement is a little bit of happiness, whether it is shooting vacation photographs of our family and our children. तो जब तक वो आपको खुशी मिल रही है, किसी को कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं मैनुअल पे शूट करता हूँ और मैं इतना ग्रेट हूँ. अगर आगे जाके आपको ऐसा लगता है, then of course, because this is a lifelong journey, you might as well, if you're not feeling it now, you might feel it later, or you might not feel it at all. Big deal. Just don't let all these thoughts come in the way of you feeling happy with your photography. लोग कुछ वक्त पहले तक कि जो फोटोशॉप करते हैं वो लोग सही अच्छे, मतलब वो लोग फोटोग्राफर्स नहीं हैं, जो मैनुअल नहीं करते हैं वो लोग फोटोग्राफर्स नहीं हैं. तो ये सारी मतलब एट द एंड ऑफ इट, इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल्स के लिए मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जानना ज़रूरी है. मैनुअल फिर भी जो है मतलब अगेन सब्जेक्टिव है. आप मैनुअल
जानते हैं नहीं जानते हैं, आई डोंट नो। एक बेसिक्स ऑफ लाइट पता होना बहुत ज़रूरी है, और एक बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ हाउ अ कैमरा ऑपरेट्स is very important for you to grow your knowledge. And as a professional, I think the world is changing so fast कि वो fundamentals अगर आपके पास नहीं है तो then it becomes, वो जो ऊपर की इमारत बनती है वो थोड़ी काफ़ी shaky होती है. And I'm looking at a lot of people who are getting into photography professionally. क्योंकि कभी क्या होता है professionally आप क्या, why you're a professional photographer, क्योंकि आपको जो है किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो यू आर सपोज टू कम आउट विथ स्टेलर फोटोग्राफ्स ऑल द टाइम. आप पर्सनली जाते हैं, आप शाम को घूमने जाते हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी लेते हैं, देर इज़ नो मनी राइडिंग ऑन इट, यू डोंट एवरी डे यू डोंट कम बैक विथ ग्रेट फोटोग्राफ्स, राइट. कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, और कोई जो है आपको, नोबडी इज गोइंग टू जज यू फॉर दैट. बट इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल then you are supposed to deliver every time. So I think that is very important for you to have your fundamentals correct. But otherwise, I think for all of us, professional or non-professional, at the end of it, it is how much happiness we get out of photography. जो हम लोग करते हैं प्रोफेशनली भी, हम लोग प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स इसलिए बने क्योंकि उस चीज़ को करने में हमें खुशी मिलती है. So don't let anything or what anybody says get in the way of the joy that you get out of photography. Sir, my name Santosh. Okay, Santosh, तुम्हारा नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है यार. Sony A74 heating issue. Heating issue, I don't know. Heating issue आ रहा है क्या उसमें? I think they resolved it कि वो स्क्रीन को पीछे से वो करके जब हम लोग रिकॉर्ड करते थे, एक दो जगह मैंने वीडियोस देखे हैं. I don't think it has a particular severe heating issue. Does it? गौरव भी पूछ रहे हैं, हाय सर, आई हैव अ निकॉन D5300. I have 35mm lens which I bought after seeing your videos. I want to upgrade to 85mm or 50mm. Which one will be better for half body shot? गौरव भी, ये आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि हाफ बॉडी शॉट आप कितनी दूर से ले रहे हैं. एंड ऑब्वियसली 85 अगर आप लेते हैं तो अगेन 85 की सही फोकल वैल्यू विल बी अराउंड 85 into 1.5 जो क्रॉप फैक्टर होता है, बिकॉज इट्स अ DX बॉडी. सो if you have that much of space, if you're okay with the look, you take the 85. But I think it might be slightly और ये है कि आपके पास ऑलरेडी 35 है और 50, तो दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा. शायद आप जो चीज़ को देख रहे हैं, यू माइट एज वेल गो फॉर एन 85 एंड सी हाउ दैट वर्क्स. If everything is done by the device, what is the need of a professional? देवापति साहा चौधरी पूछें. यार प्रोफेशनल एक्चुअली जो है, मतलब ये बात सही है, लेकिन मतलब मे बी इट इज़ अभी या कुछ आने वाले सालों में प्रोफेशनल का काम यही रह जाएगा कि वो कैमरा को उठा के लोकेशन पे लेके जाएगा, फॉर एग्जांपल वेडिंग, और वहाँ पे कैमरा को वो ऑन कर देगा और कैमरा चल चल के खुद फोटोग्राफ ले लेगा. बट द थिंग इज़ कि इफ़ इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. द थिंग इज़ कि बीइंग अ प्रोफेशनल, देर आर सो मैनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन जस्ट. तो एक तरफ तो ये है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं और उनको जो है चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है. एक और तरह के प्रोफेशनल्स इमर्ज कर रहे हैं, ख़ासतौर पे यूट्यूब पे, कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी प्रोफेशनली काम नहीं किया है, और उनकी तस्वीरें आप देखें तो मतलब दे आर जस्ट they are using all the techniques with great effect. They are using
they're doing a time lapse, they're doing long exposures, they are doing light painting and all of that. But उन्होंने professionally कभी काम नहीं किया है, और वो लोग भी जो हैं they call themselves professionals. And because they have a great YouTube following, everybody follows what they say, and there is such a lot of crap coming that way. Yet on the other hand, there are professionals who just photograph and they are like, मतलब मैं शायद maybe I should say it, maybe I shouldn't say it, लेकिन जैसे रघु राय साहब हैं, वो खुद कहते हैं कि वो टेक्निकली बहुत वो नहीं है, अडेप्ट नहीं है, और उनको जो है बिल्कुल मतलब शायद उनको ये ख्याल भी नहीं रहता है कि वो इंस्टिंक्टिवली अपने कैमरा को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. He is not getting into the settings. He is just one focus. So if you ask him, it is very कि सर आपने ये कितने f-stop वैल्यू पे लिया था, he will not, he looks very, he says you know, and initially you know ये believe करना when you are starting out, क्योंकि हम लोग इतने घुसे होते हैं कैमरा सेटिंग्स में, तो ये जो है सोचना इम्पॉसिबल हो जाता है. हमें लगता है कि ये बता नहीं रहे हैं, कि उनको याद नहीं है कि क्या था. हाँ होगा, यू नो f5.6 या 8, 5.6 या 8, तो but because he is not bothered with all of that, he knows what he is doing. When he possibly picked up the camera and put on the lens, he knows कि he's set. And so there are those professionals also who are, you know, मतलब obviously उनको वो रास्ता वहाँ कैसे पहुँचना है वो जो है मतलब they are not bothered. And I think you know ये काई वोंग जो है डिजिटल रेव पे एक वो करता था. He used to give a very very low end camera to the big photographers, and that was a really really fun series of videos to watch. So the thing is, it doesn't matter what camera Raghu Rai would use, right? It will take him about 2 days to figure out what he knows, and then I think you give him any camera, he'll be clicking absolutely god pictures like he does. And so that is also there. So the thing is कि professional का क्या काम है? It is not कि आप manual नहीं करते हैं या, but one thing I can tell you that Raghu Rai will know, in spite of saying himself कि मैं technically इतना smart नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उनको एक situation में डाल दो जहाँ उनके पास मान लीजिए fast lens नहीं है, और photographer का जो मतलब सबसे बड़ा दुश्मन वो अंधेरा होता है, let's say he doesn't, but he will crack something, that I can tell you for sure, and come with a picture, with a god picture that possibly will speak much more in terms of you know the emotion and the composition and than anything else. Can you suggest me a landscape and wildlife lens for Sony A73? या लैंडस्केप और वाइल्ड लाइफ लेंस दोनों एक में जो है मेरे ख्याल से 24-105 का जो एक जोन है, 24-135 भी आता है, या फूजी में आता है 18-135 भी आता है. तो ये लेंस जो हैं दे आर लाइक वाइड ऑल्सो एंड दे हैव अ फेयरली डिसेंट 105 इज़ अ वेरी वेरी गुड डिसेंट जूम रेंज. तो आई वुड बी वेरी हैप्पी यू नो मतलब विद अ लेंस लाइक दैट. I'm currently testing out actually a Panasonic. Nikon makes a 24-120, which is again a fantastic lens. If you want one lens to cover both your तो उसका एक जो वो आता है मतलब more expensive sibling is 24-70 2.8, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो 24-105 f4 is a great lens because it's light, it's just one lens that does 99% of the job all the time.
Usman Ayan Kari said, when you start giving regular videos on YouTube like before, we miss you a lot. Okay, what I want you to do, I want you to comment कि अगर मैं आगे videos करता हूँ, apart from camera reviews, because आगे वाले equipment और gear reviews का मुझे जो है मालूम नहीं कि हम लोग क्या करेंगे, but what are the videos you would like to see? जो लोग चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, तो मुझे जो है कुछ हेल्प कीजिए और बताइए कि किस तरह के वीडियोस देखना आप लोग पसंद करेंगे। गौरव पी करते हैं, आई हैव शॉट मेनी सिनेमैटिक वीडियो एंड फोटोज विच आई लाइक अ लॉट एज अ हॉबीस्ट, मेनी सजेस्ट टू पोस्ट इन सोशल मीडिया, व्हाट इज अ व्यूज ऑन पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया? गौरव पी, द थिंग इज़ कि आज हम लोग ऐसे दौर में हैं कि जहाँ ये मुमकिन है कि हमारा काम हम भले ही अपने नाम से या किसी कोई एक अच्छा सा इंस्टा हैंडल रख के अपना काम शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। एंड शेयरिंग आई थिंक रियली इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेकिंग योर पिक्चर्स। वो भले ही, क्योंकि आप एट द मोस्ट मिनिमम लेवल आप जब पहले फ़ोटोग्राफ्स लेते थे, और भले ही आप अब फ़ोटोग्राफ लेते हैं और सोशल मीडिया पे नहीं डालते, लेकिन जब तक आप उन्हें शेयर नहीं करते अपने घर वालों के साथ, या कम से कम जिसकी आपने तस्वीर ली है, जिस सब्जेक्ट की, तो वो जो है आप अनलेस यू शेयर, देयर इज़ आई डोंट थिंक यू रियली गेट how you say happiness out of creating that. Otherwise you would just take your photographs, put them on your hard drive, not share them with anybody. And there's a book called Share Your Work. एक छोटी सी बुक है, आप ज़रूर पढ़िएगा उसको. Maybe it'll help you in this question. But I think it's a great thing to kind of share your work. And social media, as long as it does not make you a slave, it's a very, very good thing. It's a fantastic place to be. Okay, Robin Guy, light shaping videos. Which color picture style is best for capturing portraits? यार आई शूट रॉ, सो मोस्टली मतलब पिक्चर स्टाइल का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे. ऑल्सो द थिंग इज़ कि मतलब ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट you personally like, because that will also change in terms of what camera are you using, right? Sachin Sharma, please create a vlog of your project. Oh man, okay, ये vlog का जो है ना, एक्चुअली मैंने बहुत टाइम पहले, शायद ये जब लोगों को इतना ट्रेंड भी नहीं था, आई थिंक यू मस्ट GMax स्टूडियोज़ पे 2015 या 16 में आई थिंक आई हैड मेड अ व्लॉग when I had gone to Lucknow. But still, the whole thing that, if you're going, you're traveling and you are just busy shooting and you're not being able to enjoy what you are there for. हालांकि मुझे अक्सर जो है ये लगता है वहाँ पे भी जाके ये एक रहता है कि यार मैं शेयर कर लूँ क्या, एक बार लाइव चला जाऊँ क्या, जो मेरे साथ लोग हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, क्या उनको ये जगह दिखा दूँ क्या. तो लेट मी सी, मे बी आई विल ट्राई एंड vlog, but I just think that it's a lot of hard work, and let's see. Cheap versus budget versus expensive cameras with hacks. Video shooting videos, Robin. Composition, Dr. Santosh Raut. Yeah, man, composition. That's a big one actually. पता है, मैं मतलब इतना उस वीडियो को इतनी बार स्क्रिप्ट रीस्क्रिप्ट कर चुका हूँ. I don't want it to be another video, because I think almost all the videos on YouTube where they say composition, rule of the thirds, ऐसा होता है वैसा होता है, I think they are wrong in their approach. And composition is something that is such an intuitive skill
So I'm struggling very hard for quite a few years actually to be able to put across the theory of composition. It is a subject that is very close to my heart, and let me see. I'll एक बार फिर से try करता हूँ. Sachin Sharma, please hire someone who can do vlogging for you and not bothering you much. I'm available, by the way. Okay, great, Sachin Sharma. You join the Telegram group. If you're in Mumbai, come meet me. We'll figure out something. So tell me, how many of you are interested in shooting videos? आप कमेंट्स में लिखिए ना प्लीज़. राइट नाउ देयर 29 पीपल वाचिंग, और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग में से कितने लोग आर इंटरेस्टेड इन वाचिंग नहीं, shooting videos or only photography. Let me see. Camera metering setting doesn't work with manual mode in Nikon. भाई काम करता है गौरव. वो क्या है कि आपको किसी भी तरह से एक्सपोजर ट्रायंगल की जो नीचे वो प्लस माइनस का एक्सपोजर मीटरिंग स्केल लाता है ना, तो आप अपर्चर बड़ा करके, छोटा करके, या शटर स्पीड कम तेज़ करके उसको ज़ीरो पे लेके आएंगे, एंड तो दैट विल ऑल्सो काइंड ऑफ. Guys, I also want to tell you that, I'm going to do a workshop. I'm going to do a workshop which is going to be a fairly long workshop. मतलब it's a long workshop in the sense कि वो 6 हफ्ते तक चलेगी over every weekend, and it will, I think आप लोग जो जितने भी लोग struggle कर रहे हैं, it will be a fairly what do you say, expensive, because it's going to be 6 weeks, and उसमें जो है there will be critiques, there will be live sessions, there will be pre-recorded sessions. It's going to be online. So if you are interested in that, again, please join the Telegram channel and join the community, जिसकी link नीचे description में दी हुई है, so that you can you can know when I launch that workshop. Because अभी मुझे जो है, because I'm not so what do you say regular on Instagram, तो मेरी पोस्ट लोगों को दिखाई दे रही हैं, नहीं दे रही हैं, मतलब I have no idea. Yeah, video is the future now, I remember. Yes, Robin, I told, and even now it's happening. I can see the value of photography, decreasing, and people are just not willing to pay for photography so much because they feel कि largely जो अब consumption भी हो गया है ना, वो सिर्फ social media पे हो गया है. तो social media पे इतनी छोटी photograph के लिए to hire people with big cameras and all of that, it just doesn't make sense, because और वो photograph भी उस social media feed पे रहेगी एक दिन, right? Of course they'll run a campaign and all of that. So I see the value getting degraded. I myself, have faced this. So Ronnie T, workshop online or offline? Yeah, it'll be online. It'll be online. Lessons will also be recorded. But I'm thinking यार, मतलब I'm actually thinking कि जो ये workshop के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि it'll be very intense. There will be assignments. Of course, I mean, most of you are not school-going children, so assignments जो है ज़बरदस्ती नहीं दिए जा सकते, and it's your money. But what I would like to say is कि उस workshop में जितने भी लोग आएँ, भले ही 5 लोग आएँ या 10 लोग आएँ, I hope 5 लोग भी आएँ, but I wish कि मतलब वो 5 लोग आगे जाके उनका ऐसे हो कि they come out of that workshop and they feel that it was a life-changing experience for them.
and then you can, you know, just take it and run. I have finished doing the structure for the workshop, and so yeah. Akash Gupta कह रहे हैं photography but no hate for videos. I just feel it's too much of work for shooting videos. That's true, yeah, that's true. But क्या करें यार? Everybody wants videos, and it's much more. And I think there's a lot of hard work, because मैं ये बोलता हूँ कि, you know, you in photography you take एक वक्त जो गुजर रहा है, आप उसमें से एक फ्रेम निकाल लेते हो, एंड देन व्हेन यू शो इट टू समबडी, ये उसका जो है वो ब्रेन है जो उसके आगे और पीछे की तस्वीर को पूरा करता है कि ये क्या हो रहा होगा। किसी को आपने जैसे मिड एयर में पकड़ा है और वो आपने वो फ्रेम वो आपकी तस्वीर में है, एंड नाउ इट्स अप टू द व्यूअर टू डिसाइड कि यार ये ऊपर गया है, नीचे गया है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वो एक इमेजिनेशन की जो खूबसूरती है। लेकिन वीडियो में यही है कि यही सारी चीज़ आपको उसमें दिखानी पड़ती है, तभी आपका जो है वीडियो कंप्लीट होता है। सो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई फील दैट हाँ, वीडियो मतलब आई शूट video for a living and I love films and all of that, but I feel that there's a certain magic in poetry, which there's certain magic and poetry in photography which cannot be matched. Which camera is best for photography? Canon, Nikon? जो राना फिटनेस पूछ रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे राना फिटनेस। और ये मैं बात बिल्कुल टालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि आज इस वक्त टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गई है कि हर कंपनी जो है बहुत अच्छे कैमरास बना रही है। सो मैनफ्रोटो का गिम्बल कैसा रहेगा? यार आई हैवंट पर्सनली ट्राइड इट, तो मैं जो हूँ फॉर एंड अगेंस्ट एक्चुअली दोनों कुछ नहीं बोल सकता हूँ उसके। बट व्हाई डोंट यू बाय रॉनेन, यू नो, मतलब एक कंपनी जो बना रही है गिम्बल्स बनाने में माहिर है, यू नो, सो यू शुड बाय अ ज़्यून और व्हाई वुड यू वांट टू, इज इट चीपर? अंकित गोस्वामी कह रहे हैं प्लीज एलैबोरेट अबाउट वर्कशॉप मोर। सो अंकित, अगेन द थिंग इज कि वो वर्कशॉप अगेन 6 वीक्स अभी मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा तो मैं कोशिश करूँगा कि ना हो, लेकिन अगेन ओवर वीकेंड्स ऑनलाइन we will meet in obviously in a private group, maybe on a Zoom or something. I'm figuring out the technical aspect of it, which platform do I want to use, and so Robin is saying Manfrotto and cheaper are antonyms. Okay, I get your point. तो ऐसा कुछ होगा और फिर वो हम असाइनमेंट देंगे, देन यू नो एक असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता कि क्लासरूम में और या असाइनमेंट जो हम लोग कर रहे हैं कि सबसे अच्छा किसने किया। असाइनमेंट ये होता है कि अगेन जो आपने सीखा है, जो बात की है, जो आपने वीडियोस की है, आई थिंक यू नो एवरीबडी इज़ अ यूट्यूब गुरु दीज डेज, और मैं कोई ऐसी नई चीज़ जो है यू नो नहीं उस वर्कशॉप में बताने वाला हूँ जो आपने कभी देखी सुनी पढ़ी ना हो यूट्यूब पे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई
कहीं से मुझे ये नया नॉलेज नहीं निकला है, बट द थिंग इज़ कि अपने अंदाज में मैं जिस तरह से चीज़ों को बताता हूँ, समझाता हूँ, उस तरह से समझाऊंगा। और असाइनमेंट उसी चीज़ की प्रैक्टिकलिटी ये होती है कि भाई आप जब उस चीज़ को समझ के आप कर लेते हैं, एंड देन व्हेन यू इम्प्लीमेंट इट, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, so when you come back you might not have completed the assignment very well, but you know what are the problems that you faced. And over a period of 6 weeks, मैं हमेशा, अभी भी, पहले भी कुछ देर पहले मैंने ये बात कही थी कि you will be, hopefully you will be forced to use your camera for 6 weeks at a stretch, which a lot of us don't do, right? And so at the end of 6 weeks, apart from all the theory, all the modes, all the lenses, all the, you know, the video bits and all of that, you will, you know, you will have a very, very, very strong foundation. Because I have met a lot of professionals also जिन्होंने, you know, कुछ उनके प्री कंसीव नोशंस हैं, उनको लेके चल रहे हैं, कैमराज अच्छे हैं, तस्वीरें अच्छी आ जाती हैं, एंड दे आर, you know, just they are just shooting, and you know, but as I said, technology is evolving so fast that now from project to project, when I'm, you know, doing 6 months, you know, I every time I look at new cameras, there is a new differentiator कि हाँ भाई ओके, एक प्रोजेक्ट किया था पिछली बार 6 महीने पहले, वो रेड पे किया था, अभी एरी पे कर रहे हैं, अभी सोनी FX9 पे कर रहे हैं. नाउ इफ आई वांट टू यूज अ बी कैमरा, व्हिच इज द बेस्ट बी कैमरा दैट आई कैन गेट. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो बट इफ योर नॉलेज इज स्ट्रांग, then you can really implement it, and as I say, if your foundation is strong, you can really build it. Because now I don't think, अगर आपको आगे कुछ करना है तो आई थिंक, और ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारे जहन में, यू नो, ये सवाल बन के, एक उलझन बन के, यू नो, दे आर देयर, विच अगेन आई जस्ट फील दैट, you know, so few people really enjoy the process of photography. It is so beautiful. And you know, I'm getting into, you know, a little bit of printing at home, developing at home. You know, ये कोई बहुत great photograph नहीं है. It's just a, you know, bird on outside my house. But you know, the joy of printing your stuff and the whole process of photography. तो ये वर्कशॉप से मेरा सबसे बड़ा ये है कि you become adept, you become one with your camera, and then you can truly enjoy photography. So that is what it is. Let's see. Sir, any other platform to meet you regularly other than Telegram? Gaurav P, no, not really, because क्या है कि थोड़ा सा एक वहाँ पे जो मेरा ग्रुप है, I keep an eye on it. Was not very active on it, but I will be active now. लेकिन है कुछ वहाँ पे, ये Ronnie है, Ronnie is there, then there is Ayush, there is Robin, there is Pradeep. So all these guys are there pretty, and they keep the group active, and I see it definitely. क्योंकि यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे वो मिस हो जाता है, बिकॉज एल्गोरिदम डिसाइड्स कि यार GMax स्टूडियोज़ तो वीडियो बना नहीं रहा भाई, इंस्टाग्राम बोलता है कि यार ये साला रील नहीं डाल रहा है, तो इसका दिखाओ ही नहीं लोगों को. सो यू नो, सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर. सो आई जस्ट वांट यू टू, यू नो, काइंड ऑफ be in a place where we can talk to each other and we can, you know, share stuff and all of that. So yeah. Ronnie, okay, I'm glad to hear that you're excited about the workshop. Yeah. Vaibhav Asti, I hope, sir, I wish to learn photography and videography from you. So Vaibhav, I hope we can continue our further interaction, and you can join the Telegram channel and the group. Let me see how many people have joined. बातें तो बड़ी सब करते हैं, but okay, what's happening now? जब मैंने start किया था तो 105 लोग थे, and now there are 111 people. Oh, sorry, 113. So okay, so 8 people have joined, which is good, and hopefully ये लोग community में भी आएंगे, जो टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक है.
I myself am a part of a few very, I have gotten inspired. I'm a part of a few. I started creating drawing and painting ड्यूरिंग द लॉकडाउन. पहले मुझे बहुत शौक़ था इन सब चीज़ों का, लेकिन मैंने कभी जो है ट्राई नहीं किया था. मैं एक दिन करके आई हैड जहाँ भी जाता था तकरीबन 15-20 साल से वहाँ पे अच्छी नोटबुक्स, अच्छी पेंसिल्स, पेन्स, whatever, the most whatever the best I could afford. And so I thought that so I've been a part of a few groups which are very active, and I have learnt a lot from them. And सचिन शर्मा पूछ रहे हैं सर लिंक कहाँ पे है टेलीग्राम चैनल का? डिस्क्रिप्शन में है. पहली लिंक जो है सचिन वहाँ की है. गौरव पी सेइंग आई विल आल्सो जॉइन. सो आई एम हैप्पी या गाइज, एंड आई रियली होप आप लोग जो है यू कंटिन्यू इन योर एंडेवर to shoot some photographs, shoot your mother. जो मैंने कहा था, there's a chance to win 3 of these books. एक बार फिर कह रहा हूँ कि I have bought 3 of these books. I plan to do. ये किताबें हैं. This is the book, my own copy. I will open it. This is a wonderful picture during the floods. It's a crazy picture. मतलब वो घर के बाहर है लड़की और कमर तक पानी आया हुआ है. So Gaurav P, as a photographer, how important is Photoshop? Whether we should learn Photoshop? Lightroom has improved me a lot. तो यार मैं भी मतलब 99% जो है आई एम यूजिंग Lightroom only, and अभी तक मुझे जो है ज़रूरत नहीं पड़ी है Photoshop. मैं बेसिक एक जानता हूँ. मतलब आपने देखा होगा कि वो जो बेसिकली इस लाइव की भी थंबनेल, तो एक फ़ोटो खींच के उस पर टेक्स्ट थोड़ा लाइन करना, ये वो. एंड नाउ Photoshop is also like really improving, but unless you are working with layers, you are adding or removing something from the pictures, I don't think Photoshop is really all that necessary. On that note, how many of 24 are watching? I would really like your opinion कि अगर हम एक सेशन करें जहाँ I'm processing a photograph in Lightroom and I'm talking through it, would you be interested in watching something like this? So I don't think Photoshop is that important, but yes, Lightroom is enough, I feel. कि आप जो है बाकी तो यार मतलब I'm doing a course right now, trying to get certified in DaVinci Resolve. I know how to operate it, लेकिन ये क्या है कि एक structured knowledge वो करके एक black magic से एक certificate कि भाई this guy is now he's a proficient DI colorist, correct, and it is important. Yes, the one thing that I want to learn LR and Photoshop. So yeah, so sure. So तो इस तरह के videos, I was thinking that possibly कि हम लोग का वो एक बना रहे, because again I don't see myself doing too many reviews, because again I think मतलब again gear reviews, I will do gear reviews about the gear that I am using. I feel कि but possibly you will not like them a lot because of the kind of cameras that I use. I'm in a slightly different space, but I will still try to figure out. You have given me your suggestions, और मैं देखता हूँ कि कैसे जो है उसको we can move towards a common goal, and the common goal being
enjoyment out of learning photography and doing photography. So that is what I wish for everybody. And once again, before I leave, shoot your mother contest. Go to the Instagram channel. वहाँ पे rules वगैरह हैं. And there are 3 books. Akash Saini कह रहे हैं, sir, please make regular video on YouTube. Akash, yeah, that's what I'm trying to say. I will try my best. My regularly might not be regular enough for YouTube. YouTube now wants you to make, you know, YouTube तो चाहता है कि भाई आप 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो रोज़ एक वीडियो डालो. So that's what the social media networks of today want you to do. They want you to create content for them. तो वो तो शायद मुश्किल होगा. And I don't have any problem admitting कि I am having a tough time, you know, keeping up with the pace and seeing कि, you know, मतलब, so my YouTube channel is more or less dead, right? क्योंकि उसमें जो है वो आप डालिए नहीं तो YouTube जो है doesn't put your videos in search results. Same with Instagram, because one is not making reels these days. I haven't, मतलब reels तो छोड़ दीजिए, I haven't been posting regularly also. So that's that, yeah. But so therefore I am trying these alternate things like a Telegram channel कि जहाँ पे हम लोग at least जो लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, जो लोग मिलना चाहते हैं, वो ये algorithms के मोहताज ना हो. So hopefully I was thinking of doing a live on Telegram also. Let's see, मैं उसका भी जो है एक try करता हूँ. Let's see how that goes. So yeah, in real also your voice is awesome. I thought it was in your तो videos में भी मेरी ही आवाज़ है यार, मैं किसी से dubbing थोड़ी ना करवा रहा हूँ. Okay, but you probably thought that there was a lot of treatment. Okay, thank you so much for the compliment. Robin Ghai wants to know what are curves. Now, what are the curves are we referring to, Robin? There are many kinds of curves, as we all know. So, Sachin Sharma keh rahe hain, your YouTube channel is the base of my photography. You are an inspiration to us. So good, yeah. I'm really happy to meet all of you. This has been like, as usual, मुझे लगता है कि थोड़ा आधा घंटे करेंगे. Sir, have you watched Social Dilemma? Yes, I have. I have watched Social Dilemma, and I'm looking at social media with a very keen eye. I find it absolutely fascinating. I find it very fascinating how our world is changing in front of our eyes. And तो आप भले ही उसको पसंद करें या ना पसंद करें, सच तो है कि ये है. And you know, it has become so crazy because now it has become all pervasive. Even your, you know, bona fide, you know, news channels like Times of India, News 18, ये लोग जो है, you know, they just make news out of, you know, what people post on social media. अभी मुझे किसी ने उस दिन वो भेजा, इंडिया टाइम्स ने जो है पोस्ट किया था कि शिल्पा शेट्टी plans to leave social media. She says it is all the same, and they had made a news piece out of it. And so yeah, so it's crazy, it's evolving, it's very, very fascinating, and it's there, it's going to change the world for good or bad. Curves in photos editing, Robin Ghai has clarified. Yes, of course, I will let you know, and we can talk about curves at some other point of time in a different video, possibly a live session. ठीक है guys, from me this is it. I really hope to see some entries on you know, shoot your mother contest, and
if anybody else wants to ask me anything, you can. I'm here for a few minutes, and ओके, आई एम रियली ग्लैड यहाँ पे एक मुझे ना नीचे क्लिप का एक ऑप्शन दिख रहा है. इफ़ इट इज़ व्हाट इट इज़, देन आई वुड रियली लव टू ट्रिम द फर्स्ट 7 minutes जहाँ पे देयर वाज नो ऑडियो एंड यू गाइज वर वेटिंग. सो लेट्स सी. मैं देखता हूँ. दिस इज़ अ न्यू ऑप्शन. आई एम सीइंग इट इन this for the first time. How many of you want to be YouTubers? Do you want to start a YouTube channel? Can we tag an old photo in the contest? Sachin Sharma, yes, you can, I guess. You have to use a hashtag. You don't have to tag me. You have to use a hashtag. So put a hashtag. If the hashtag वो हो जाता है, there is no way that I will get to know, or it's not a disqualification, Sachin, कि आप पुरानी फोटो जो है कर रहे हो. But yeah. Robin, oh yes, driving sanity on Indian roads. That is a much required YouTube channel. Yeah, your YouTube channel will do well. Yeah. Avinash Kumar, Avi, hello. Avinash Kumar se yaad hai, I have also got an old interview of Avinash Gwarikar. It was a fantastic interview, which I haven't published. देखता हूँ उसको re-edit करके. What had happened कि that time when I had interviewed him, he was using Nikon, and then he moved over to Sony. Then I went and I asked him. I said कि वो किया था हम लोगों ने, तो मैं उसको पब्लिश करूँ क्या? बोला नहीं यार, मैं तो उसमें जो निकॉन यूज़ कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो लेट मी सी इफ आई कैन edit out all the parts, and because he spoke very good stuff. He spoke very good stuff. That and this Atul Kasbekar. Education people about road sense. Robin, yeah, that's true, yaar. But the thing is कि how do you do it without offending people? Because यहाँ पे थोड़ा सा बर्थ राइट लोगों को रखता है बदतमीज़ी करना, या वी आर जस्ट नॉट ब्रॉट अप विद दैट सिविक सेंस. मैं खैर एक अलग एक्सट्रीम हूँ, लेकिन मुझे जो है बहुत गाली पड़ चुकी है, क्योंकि जब तक ट्रैफिक लाइट चलती हैं मैं उनका जो है आई ओबे देम. वो भले ही रात का 12 बजे हो या 1 बजे हो, तो अगर रेड लाइट है, कोई ट्रैफिक नहीं है और रेड लाइट है, तो आई विल स्टिल स्टॉप एट द रेड लाइट. और पीछे वो बंदा आके जो है ही इज़ लाइक honking away to glory, and then of course he reverses and then he abuses me and goes. So मुझे भी बहुत पड़ी है, but the thing is possibly that's my behavior is also an extreme. But I would really like to see some good channel on I have a channel named Tangy Tales in which I put unique stories. Sachin Sharma बोल रहा है. Recently put Sona Mona, the conjoined twins video on it. Really, Sachin? Okay, that's fantastic, yeah. I will look it up. And that's really fantastic. You have a, what's it called? Tangy Tales. Okay. Wow, 287
K views, huh? You have got a new subscriber, my friend. Actually, telling people about driving, what to do, different strips on roads means that's true. So, अगर सही तरीके से आप अगर अपना लाइसेंस बनवाते हैं और अगर सही तरीके से आपने अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और बाकायदा वो टेस्ट दिया है तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही होंगी. But I think we choose not to obey it. But I think it's a very good idea to start something like that. I will watch that video, Sachin, Sona Mona. Chalo guys, great talking to you, and I will see you shortly. I promise you that it will not be such a long time before we meet next. And please join the Telegram channel. Please share it with your photography friends. And yeah, let's take it from here. I'm very excited. Okay, bye bye. Thank you so much. अगली बार तक